Introduction to Principles of Finance. This is the first chapter that we are, and this is your first week, Unit 1.3. In this unit, you will be given an idea of what are financial markets. Before going to financial markets, let me tell you what are markets. Market is any place. Market refers to any place where the exchange of goods or services take place. For example, if you talk about textile market, now what is textile market? A textile market is a market where cloth or anything related to textile, okay, maybe it your shirts, maybe trousers, maybe curtains, maybe bed sheets, anything related to textile is either bought or it is sold. Okay, in the same way, what are financial markets? Financial market refers to any market where the financial goods or services are exchanged. Okay, now what are financial basically financial goods? Financial goods are actually financial instruments. Okay, financial goods are actually some non they are not tangible, they are actually non-tangible. You cannot see any bond, okay, you cannot actually, but they are simply certificates or papers, और अब तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है. So if you buy certain bonds or if you buy certain stocks or shares, तो अब तो बस ये होगा कि आपके अकाउंट में एक ईमेल आ जाएगा. ठीक है, सो ये जो फाइनेंशियल गुड्स होती हैं, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, they are not any tangible, but of course they have worth. ठीक है, अगर आप कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं किसी बैंक के, तो आपको मे बी थोड़े से पेपर वर्क होगा और एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, बट यूजुअली नाउ थिंग्स आर सो मच इलेक्ट्रॉनिक कि वो आपके पास एक ईमेल की सूरत में या आपके अकाउंट में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा दैट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड दैट इज़ very much secure. So let us talk about financial markets in detail now. Okay, so let me change. A financial market is a broad term describing any marketplace where buyers and sellers participate in the trade of assets such as bond and currencies. ठीक है, करेंसी का एक्सचेंज की भी जो मार्केट होती है, करेंसी एक्सचेंजेस जो होते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर फाइनेंशियल मार्केट. Financial markets are typically defined by having transparent pricing, basic regulation on trading, cost and fee, and market forces determining the price of securities that trade. ठीक है, यहाँ पे आपको transparent rules and regulations मिलते हैं, transparent pricing होती है, there is a cost or a fee associated with every transaction like in any other market. So that is the same with financial markets. Financial markets can be found in nearly every nation in the world. Some are very small with few participants, while others are like New York that are very big. जिसमें New York Stock Exchange, that is one of the biggest stock exchange in the world, जहाँ पे ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेड every day होती रहती है. So what is a financial market? I repeat, financial market refers to any market where the transaction of financial instruments take place and currencies take place. ठीक है, now there are different types of financial market that are categorized as capital market, stock market, bond market, and money market. So let me explain you each one of them shortly. Now, what is a capital market? A capital market is the one in which individual and institutions trade financial securities. Organization and institution in the public and private sector often sell securities on the capital market in order to raise funds. Thus, this type of market is composed of both primary and secondary market. Now, let me explain you what are financial securities. Okay? For financial securities, or you can say they are also called saving certificates. For example, you are a big business and now you want to start a new venture. ठीक है, you want to start a new project for which you need to arrange finances, जिसके लिए आपको पैसे arrange करने हैं. So what you can do, you can sell off financial securities of your
company, and you will pay people some amount of interest, a fixed amount of interest over that, and and at the end of the tenure you can, you will also pay them some more money. Okay, so these are actually secure, this is secure financial this is a secure, I would say, financial investment, क्योंकि इसके अंदर आपको मतलब एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है कि यू विल डेफिनेटली गेट द इंटरेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली गेट the final amount at the end of the tenure. इसके अंदर कोई ifs and buts नहीं होते, ठीक है। जैसे आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स और भी सुनी होंगी, इस बेसिक मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनटू इस्लामिक बैंकिंग, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई आप प्रॉफिट और लॉस दोनों में शिराकत दार होंगे, ठीक है। इसमें आप, it's not like that, इसके अंदर ये होता है कि a fixed promise is given and that promise will be fulfilled. So these are financial securities. and आपको वर्ड से भी पता चल रहा होगा securities क्या होते हैं, ठीक है, something which is secure. Okay, now let me explain you what is primary market and what is secondary market. Primary market refers to a place where completely new new shares and stocks are floated, ठीक है, जहाँ पे on secondary market refers के जहाँ पे already sold चीज़ें दोबारा से sale हो रही होती हैं, मतलब you buy things and you sell and then somebody else will buy and it continues. Stock market, सबको पता है, I'll explain you again. Stock market is a place where the trade of stocks take place. The biggest stock market in Pakistan is Pakistan Stock Exchange, but definitely you cannot go and buy everything from Pakistan Stock Exchange directly. There are different companies that are responsible to offer services to the common man. So स्टॉक मार्केट इज़ बेसिकली जहाँ पे आप स्टॉक्स या शेयर्स, शेयर एंड स्टॉक इज़ एक्चुअली सेम थिंग, आप शेयर्स और स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, and you are investing in different companies, and then if you keep your investment, if you hold your investment over there for complete 1 year, you are entitled for the dividend. या आप 1 साल से पहले ही बेचते हैं तो फिर आप को जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो मिल जाएगा, बेशक डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. नाउ व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन एंड ऑल, ये भी आपको बाद में सारा कुछ पता चलेगा एज वी कंटिन्यू विद द कोर्स, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज बॉन्ड मार्केट. अच्छा, ना बॉन्ड इज अ डेट इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटिटी which borrows a fund for the definite period of time at a fixed interest rate. Bond, देखिए अब bonds जो होते हैं, bonds is actually what bond से भी आपको clear होगा, bond something something fixed, ठीक है. डिफरेंट कंपनीज होती हैं, अगर वो न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना चाह रही है या उनको फाइनेंसिंग अरेंज करनी है या उनको पैसे अरेंज करने हैं, तो वो बेसिकली लोन ले लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कॉमन पीपल से, एंड दे साइन बॉन्ड्स विद देम, ठीक है, उनको बॉन्ड दे देते हैं और आपको उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट फिर मिलता रहता है. एंड द लास्ट वन इज मनी मार्केट. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मनी मार्केट में बेसिकली वो वाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेड हो रही होती है विच हैज़ अ वेरी शॉर्ट मेच्योरिटी एंड विच कैन टर्न इनटू लिक्विड वेरी क्विकली. अच्छा, लिक्विड से मुराद फाइनेंस में होता है कैश, हार्ड कैश, ठीक है. any such security which can turn to liquid very quickly, उसकी, जिसको आप फौरन से बेच सकते हैं, जिसके जो टेन्योर्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, वे बहुत शॉर्ट उनकी मेच्योरिटी होती है, दैट इज़ यूजुअली ट्रेड इनटू फाइनेंस मनी मार्केट, ठीक है. इसकी फर्दर डिटेल आप रीड भी कर सकते हैं नेट पे, और अगर पे कोई क्वेरी होगी तो वो हम अपने जूम सेशन में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं. थैंक यू.